हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शंकर वर्मा's आर्ट क्लास। आज की क्लास में हम वर्ली आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द वर्ली आर्ट एंड हाउ टू डू इट स्टेप बाय स्टेप्स बाय यूजिंग वेरियस शेप्स। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग करना बताऊंगा कि इस तरह से हम बनाएंगे वर्ली आर्ट को। हमने अपनी पिछली क्लास में वर्ली आर्ट को करने के लिए कुछ बेस तैयार किए थे, जिसमें से कुछ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। दैट इज डन विद द ब्लू एंड रेड कलर. This is done with yellow and red color, and it is done with yellow and blue color. So this is the paper which we are gonna use for the background of the Varli art. हम इसके ऊपर वर्ली आर्ट करने वाले हैं. But before doing directly on this, I'll let you know some basic drawing, so that you can come to know and more confident when you are going to make on these papers. So you just have to follow the instructions. Let's do it with me. And what material is required to make this Varli art? And one more thing which is I'm gonna tell you, if this is the for beginner, all the students who are starting the Varli art, this is the basic for them only, right? So अगर आप स्टार्टिंग स्टेज कर रहे हैं, अभी सीखना चाह रहे हैं, तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे किस तरह से हम वेरियस बॉर्डर्स हम बना सकते हैं वर्ली आर्ट में, और किस तरह से हम डिफरेंट हर्ट्स और उनका क्या पैटर्न होता है, किस तरह से ट्रीज बना सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, एनिमल्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्ली आर्ट के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आज की क्लास में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। और इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। आई थिंक सभी को पता होगा वर्ली आर्ट के बारे में, बट जिनको नहीं पता उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वर्ली आर्ट के बारे में। इट इज़ जनरली done with the various shapes like triangle. Most importantly, this is originated in this art from the Maharashtra. And in the Varli art we are going to depict day to day's life. ठीक है, जो डिपिक्शन होता है हमारी डे टू डे लाइफ का, जो हम करते हैं अपनी डेली रूटीन में, that is going to be represent through the Varli art. So let's do it with me. Material required for make this Varli art is in description box. You can check it out from there, and let's do it without wasting more time. Ancient people were used to use these art forms to decorate their homes' walls. And it is generally done on the red surfaces, and it is done with the white color that was not actual in color, that are the rice flour, जो चावलों का आटा होता है, that is used in ancient techniques. But nowadays जो वर्ली आर्ट है, that has come in the mainstream. So various artists has used various methods and various techniques to make this Varli art on the different backgrounds. As this art form has come in the mainstream, so you can see the patterns on the sarees, dupattas, or on the handbags, etc. Nowadays it is going to be more popular as an art form, and it is very easy also to make by using various shapes. As you can see, some zigzag lines we just use to make their hands and legs, and we are just making triangles to make the body of Varli art. We just have to draw a circle, then make two triangles, joint triangles, and then zigzag lines we have to make the legs, and same way we have to make zigzag lines to make the hands also. So these are the various figures which I will mention at the end of this video. Which figures are these? Like one is the male, and the second number is female, third is boy, fourth number is girl. As you can see, boy and girl are quite similar to the male and female, but they are a little bit small in the size. And on the fifth number you can see a old lady, and in the sixth number you can see a lady with pot. Now I am going to make a dancing figure in Varli art. इस तरह से आप एक लेग को अपलिफ्ट करते हुए दिखा सकते हो, और एक हाथ ऊपर और एक नीचे. देन इट लुक्स लाइक एज अ डांसिंग फिगर. सेम वे इफ यू हैव टू मेक अ वर्किंग वुमेन, then you can do something like this as I am doing right now.
basic is the same, only the movement of the hands and legs can depict that what are they doing. So now you can see this is the working Varli picture. Now you can see I am going to make a lady with two pots in their hand, one in their hand and one another one is at the head. Students and my dear friends, if you learned something through this video and you feel it's helpful for you, then please do like, share, comments and subscribe my YouTube channel, so that you can never miss an update of any other video. अगर आपको किसी भी फिगर को लेकर कोई भी डाउट है, यू कैन टेक्स्ट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर यू. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न एनी अदर अपार्ट फ्रॉम दिस फिगर्स, कुछ नया आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो फॉर यू. So as you can see, I have made a lady or male with the wooden sticks, and lastly I am going to draw a baby. Now I am gonna mention which figures are these. After naming these figures, I will tell you one more method which you can implement on that figures. Either you can make them dark, like if you feel there is a circle and triangles, that can be dark, or you can leave it as it is. It is as per your choice. It is not mandatory to fill it up or leave it blank. जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे ही आप इनको कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट, सो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से हम चाहें तो कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट्स योर चॉइस. If you wish to paint them as I am doing, then you are most welcome. Otherwise, you can leave it as it is. That is up to you.